Dear students, you're all welcome in this lecture. Here in this lecture, I'm going to discuss with you the principal focus and focal length of a concave mirror as well as the principal focus and focal length of a convex mirror. Now, you are well aware about the spherical mirrors and you have got the concept of concave and the convex mirror, and you are also well aware about the terms that are used in the study of mirrors. Dear students, let us go straight to the topic, that is principal focus and focal length of a concave mirror. Here in this diagram, this is here a concave mirror. You know that the concave mirror has the reflecting surface from the inner side. This is the inner side of the concave mirror and the outer side is polished. You are well aware about the principal axes. Yesterday's lecture, I gave you the concept about this principal axis. What's principal axis? Dear students, principal axis is a straight line passing through the pole of the mirror and center of curvature. A straight line that's passing through the pole of the mirror, that means center of the mirror and the center of curvature. That straight line is termed here as principal axis. So this is here a principal axis which is passing, this is pole of the mirror, and here this is center of curvature, its principal axis. Now dear student, look at the diagram very carefully, very carefully. Here this is a ray of light, this is here another ray of light. Similarly, from the bottom side of the principal axis, this is here a ray of light and this is here a ray of light. Dear students, when these ray of light strikes this concave mirror, when these ray of light touches this concave mirror, what happens? They get reflected, they get reflected. This ray get reflected, this ray, and all these rays, or we can say the beam, a parallel beam of light rays. Here the parallel beam of light rays falling or striking this concave mirror, they get reflected, they get reflected from this concave mirror. Dear students, when they get reflected from this concave mirror, they meet, or in other words, they converge at one point. So this ray gets reflected in this direction, this in this direction, and similarly these rays, after reflecting from this mirror, they converge, they meet at one point. And the point where these rays meet, where these rays converge, where these rays, we can say the where these rays focus, वह these rays meet together, ये सारी रे जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आती है, ये एक ही पॉइंट पर मीट होती है, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज होती है. और जिस पॉइंट पर ये रेज कन्वर्ज होती है या मीट होती है, that very point is here called, dear students, the principal focus of concave mirror. So let's go to the definition. Light rays that are parallel to the principal axis of a concave mirror. Here these are the light rays which are parallel, which are going parallel to the principal axis of a concave mirror. They converge at a specific point on its principal axis. So they converge at a particular point, that's here point F, on the principal axis after reflecting from the mirror. This point is known as principal focus of the concave mirror. It is represented by letter F, capital F. So dear students, the principal focus of a concave mirror is a point where the parallel beam of light rays, which are parallel to the principal axis, after reflecting from the mirror, converge or meet at this point. So this point is here termed as principal focus of the concave mirror. It is here represented by letter F. Got it here? Now, after the principal focus of concave mirror, here is one more term, here is one more thing which you should know, that's focal length. So dear students, the distance between the pole of the mirror and the focal point of the mirror is known as focal length. So this is focal point F and this is pole P. The distance between focus or principal focus, or simply we can say the focal point and the pole of mirror, this is termed as focal length of the mirror, and it is represented by letter small f. I think you got it here. Here in concave mirror, light rays which are parallel to the principal axis after reflecting from the mirror converge at a specific point, converge at a particular point. Okay? And we can say that they meet at a point, and that very point is termed here as principal focus of the concave mirror. You got it here. Now, from concave mirror, let's go to the principal focus
and focal length of convex mirror. First, let's understand the principal focus of convex mirror. You know that this is here a convex mirror. कन्वेक्स मिरर का जो आउटर साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, इनर साइड इज पॉलिश्ड, इसका अपोजिट होता है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए दिस स्ट्रेट लाइन, दिस इज हियर द प्रिंसिपल एक्सिस है ना। सो दिस इज पासिंग थ्रू द पोल पी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस कन्वेक्स मिरर, क्योंकि इस प्रिंसिपल एक्सिस को मैंने राइट साइड एक्सटेंड किया है विद द डॉटेड लाइन। यहाँ से ये रियल लाइन नहीं बल्कि ये डॉटेड लाइन है, ठीक है, यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट पास हो जाएगी। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको यहाँ से एक्सटेंड किया है। सो प्रिंसिपल एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल बी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर, दैट्स कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ यहाँ की तरफ देख लीजिए, यहाँ पर ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट है। दीज आर द पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जा रही है। जब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज इस कन्वेक्स मिरर पर पड़ती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये यहाँ से रिफ्लेक्ट, ये यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से। लेकिन अगर हम बैक साइड में इनको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, इन रेज को बिहाइंड द मिरर अगर हम एक्सटेंड करेंगे, जब हम बिहाइंड द मिरर इस रे को, इस रे को, इस रे को, इस रे को एक्सटेंड करते हैं, तो हमें लगता है ये एक पॉइंट पर मीट हो रही है। असल में ये मीट नहीं हो रही है। यहाँ पर ये इन हम कहेंगे यहाँ पे इन द रियल सेंस, इन रियलिटी दे मीट। लेकिन कन्वेक्स मिरर में ये रेज हमें नहीं लग रही है कि मीट, बल्कि दे अपीयर टू मीट एट ए पॉइंट। और जिस पॉइंट पर ये अपीयर टू मीट होती है, दैट डिफाइंस और वी कैन से दैट इज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कन्वेक्स मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस where a beam of light which are parallel to the principal axis after reflection from the mirror appears to meet। ये जब रिफ्लेक्ट होती है तो हमें क्या लग रहा है, दे appear to meet और वी कैन से डाइवर्ज फ्रॉम द पॉइंट। या हमें लग रहा है कि इस पॉइंट से ये डाइवर्ज हो रही, बिखर रही है। सो this is here the principal focus of a convex mirror. Similarly, distance between pole of the mirror and the focal point of mirror, that's known as focal length। यानी pole और focal point के दरमियान जो distance होती है, that's here termed as the focal length, which is represented here by small f। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए इन डियर स्टूडेंट्स, हम ये कहेंगे इन केस ऑफ कनकेव मिरर द प्रिंसिपल फोकस इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने होता है, क्योंकि ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो प्रिंसिपल फोकस इसके सामने बनता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वाइल इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करेंगे, ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है इट इज़ बिहाइंड द मिरर। तो कभी हम आपके साथ और डिस्कस करेंगे, वी विल से दैट दिस कनकेव मिरर हैज़ गॉट अ रियल फोकस वाइल एज कन्वेक्स मिरर हैज़ गॉट अ वर्चुअल फोकस। So, dear students, you need to remember the difference between the principal focus of concave mirror and the convex mirror। तो कनकेव मिरर में क्या होता है कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, दे मीट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, उस पॉइंट को हम यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज होती है टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दे गेट व्हेन दे गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर, दे अपीयर टू मीट। यहाँ पर हम सीधे कहते हैं दे मीट और कन्वर्ज, यहाँ पर हम कहते हैं दे अपीयर टू मीट। हमें लग रहा है कि मीट हो रही है at a particular point, or we can say they appear to diverge from that very point. Here that very point defines, or that very point is the here the principal focus of convex mirror. Now the difference is obvious, it's clear, and I hope dear students you have got this, you have got this concept, the principal focus and focal length of concave mirror as well as convex mirror. Inshallah in the next lectures I am going to discuss the other relevant topics of this chapter. Till then, Allah Hafiz.